was breaking news coming in. Police will escort Anand Singh to the Patna judge's residence today. Now, due to the court being closed on Sunday, the police will escort him to the judge's residence and he will be produced before the judicial magistrate. Anand Singh will be produced after medical examination also. Anand Singh is a JDU candidate who has been arrested in connection to the Jan Suraj party supporter Dular Chand Yadav, and the cops will now escort Anand Singh to the judge's residence. These are the developments coming in terms of the Dular Chand Yadav murder case, where Anand Singh, the JDU candidate who was earlier arrested, will now be produced before the judicial magistrate after the medical examination. We are bringing you these back-to-back developments. The JDU candidate will be produced before the judicial magistrate today after a medical examination. As the court is closed today, it's being a Sunday, he will be taken to the residence of the judge itself, escorted by the police. Anand Singh to be produced before the magistrate. Anand Singh, along with two other accused associate, Anand Singh and two of his associates were also arrested. Operation is underway when we understand how that the opposition had lashed out at the NDA government in Bihar, and this is coming in right ahead of the polls slated to take place in a few days to come. And these are the reports coming in from Mokama, where all right, my colleague Prakash is joining us live on the broadcast for more details. Prakash, now Anand Singh is being escorted to the Patna judge's residence, and he will be taken in front of the judicial magistrate after the medical. Give us more details. Well, yes, late last night, Anand Singh was arrested on charges of orchestrating a murder, and there were charges that one of his supporters shot him in the leg, and thereafter, please fix the echo, please. Shot in the leg, and the post-mortem report is concerned. He was arrested late last night along with his supporters, two supporters, Manikant Thakur as well as Ranjit Ram, who were the perpetrators of the crime. He was brought to Patna, and in this place, over here in the police lines, Anand Singh has been kept in one of those cells, and today he'll be produced in the court, and after the judgment of the court, he will be taken to jail. And the Patna Police SSP Kartikeya Sarma has already said that we will demand for a remand for further interrogation in this case. Now, this case has boiled up the entire election process in Bihar, because Mokama and the Tal area specifically have been crime-ridden since a long time, for the past 45 years or so. And his brother Dilip Singh was also a notorious criminal. There are charges of extortion, murders, and more than 3 dozens of criminal cases against Anand Singh. Recently, 2-3 months back only, he got a bail in a particular case of a gang war, and he's out on bail. And now he is again being sent to jail. Now, the repercussion of this entire incident will have a definite fallout on the election process in that particular area. And the Jan Suraj candidate, who is primarily Dhanuk by caste, and the Dhanuks primarily supports Nitish Kumar, will have to wait and watch what kind of dent he makes into the JDU's candidate's prospects as far as the elections are concerned. So the election in that particular area has become all the more interesting. Back to you. That's right. Any reaction coming in from the JDU? Any reaction on this front? Yes, the JDU has reacted. The JDU chief spokesperson Neeraj Kumar has already stated the fact that the law is taking its own course as far as the Mokama incident is concerned, and the police is vigilant, and that is why the JDU candidate has been arrested in this particular case.
That's right. We are, of course, tracking all those details on that story, and Prakash was bringing up us the latest developments. Thank you for giving us those details, Prakash. Let's also quickly listen into these political reactions coming in on this. देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही। ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है। इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये विपक्ष को करारा जवाब है। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करने वाले लोगों को फर्क मालूम हो गया कि 90 से 2005 में अगर ऐसे अपराध होते थे तो फिर पुलिस की हैसियत नहीं थी कि वो राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ हाथ डाल सके। लेकिन एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न अवसरों पर जब भी कभी पार्टी या गठबंधन के किसी नेता ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, कार्रवाई हुई और ताज़ा जो गिरफ्तारी है उसी दिशा में एक बड़ा फैसला है। और निसंदेह ये दोनों ही जंगल राज का वो जो दौर है और आज के सुशासन की जो सरकार है, दोनों के काम करने के तौर तरीकों का जो बड़ा फर्क है उसको साफ साफ स्पष्ट करती है। लेकिन देखिए, एक तो गिरफ्तारी में विलम्ब क्यों हुई और सरकार की, चुनाव आयोग की, प्रशासन की जब फज्जत हो रही थी, लगातार श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे थे। इसके बाद सरकार अपनी फज्जत से बचने के लिए ये खाना पूर्ति की गई है गिरफ्तारी। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा है पूरा बिहार। चाहे सिवान में एएसआई की हत्या हो, आरा में 2 लोगों की हत्या हो, रोहतास में हो, मोकामा में हो, ये गुंडा राज है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जंगल राज का कैसेट, जो जनता का राज, गरीबों का राज था, कहते हैं। अब ये गुंडा राज पर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज रोड शो था, तो ये सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति की गई है। आखिर इतना विलम्ब क्यों हुआ, ये देरी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल भी प्रचार प्रसार किया गया, तो ये सिर्फ दबाव में जो सवाल उठ रहे थे, सरकार फज्जत हो रही थी, इसके लिए खाना पूर्ति की गई है। बिहार में गुंडा राज, अपराधी राज कायम है किस तरह, ये चारों ओर दिख रहा है। And viewers, some breaking news coming in. Shehbaz Sharif government begins a crack